पड़ेगा। और उसके बाद 2B का जो आईटीसी है वो आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए, उसका रिकंसिलिएशन आपको बाद में करना पड़ेगा। तो आइडियली हम लोग कैसे करेंगे? तो जैसे भी 2B में जो भी फिगर्स है उसको हम लोगों ने ले लिया है, और इसके बाद जो हम लोगों को जो करना है उसका रिकंसिलिएशन करना है। तो इसमें क्या क्या करना है? जो भी परमानेंट रिवर्सल है, व्हाट इज परमानेंट रिवर्सल, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। जैसे 4B1 रिवर्सल क्रेडिट बाय बैंकिंग कंपनी और a financial institution, rule 42 reversal of input. So a company which is using both taxable supply and is also selling exempted supply, in their case if any credit has to be reversed, that is also reversed through rule 42. If I am buying a capital goods like a plant and machinery, okay, or maybe something else which I am going to use, ठीक है, सर्च कर सकते हैं। so if I have to use that, then in that case what I have to do is that when I'm using that capital goods, I'll have to reverse the ITC on the proportionate value if I'm using it for both, you know, the exempted supply and for the taxable supply. So that is how it works. Another ITC that I need to reverse under permanent reversal under 4B1 is the ineligible ITC under section 17.5. So till now, whatever ITC was ineligible, I did not care for it. So what is ineligible ITC? Which is blocked by section 75, like ITC on motor vehicles, ITC on insurance, ITC on health club, ITC on cabs, ITC on food and beverages, ITC on works contract, ITC on gifts, etc. So all this ITC, what we did is in the all other ITC column, from there we used to deduct all this and show the net ITC. But now we have to show the all other ITC in the ITC column and the ITC under section 17.5 that has to be deducted under permanent reversal, also known as table 4B1. Okay. So after this, what is temporary reversal? What is the temporary reversal? The temporary reversal is where, due to non-payment of consideration to supplier within 180 days, you have to reverse the credit. So मैंने credit ले लिया है, but 180 दिन में मैंने creditor को payment नहीं किया। तो इस situation में as per rule 37 मुझे reverse करना पड़ेगा ITC, और मैं जब payment करूँगा उसके बाद मुझे वो दिखेगा। उसके बाद मुझे वो जो क्रेडिट है वो मैं रिक्लेम कर सकता हूं, तो वो मुझे रिक्लेम करना पड़ेगा, एंड जब मैं रिक्लेम करूंगा उसको मुझे ऑल अदर आईटीसी में ऐड करना पड़ेगा। बट रूल 37 क्या बोलता है कि जब भी आपका कोई भी पेमेंट 180 डेज से ज्यादा है तो उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा, और जब आप क्लेम उसको पेमेंट कर दोगे तो आप रिक्लेम कर दोगे। नेक्स्ट इज 16(2)(b which is for non receipt of goods or services. So goods or services maybe you have not received. अब तक क्या था, अगर मैंने if I not receive the goods, अगर मुझे goods या services नहीं मिले तो I did not take the credit. बट अब क्या बोलते हैं कि आप all other ITC में क्रेडिट ले लीजिए, और जो भी आपका नॉन रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के आईटीसी है उसको आप टेबल 4B1 उसमें दिखा दीजिए। तो क्या हो रहा है इसमें 4B1 में हम लोग परमानेंट रिवर्सल दिखाएंगे, और 4B2 में हम लोग टेम्पररी रिवर्सल दिखाएंगे। तो 4B2 में हम लोग टेम्पररी रिवर्सल दिखाएंगे। और डी बोल के एक टेबल है, डी टेबल में क्या है, जैसे हम लोग कल पर बताए थे, डी टेबल इज बेसिकली फॉर द डिस्क्लोजर्स। और ये डिस्क्लोजर्स में क्या है, जो भी आईटीसी मैंने पहले रिवर्स किया था, जैसे फॉर गुड्स इन ट्रांजिट और फॉर रूल 37, अगर मैं उसको रिक्लेम कर रहा हूं इन ऑल अदर आईटीसी, तो वो उसका डिस्क्लोजर मुझे यहां पे देना पड़ेगा 4D1 में। लेकिन 4D1 आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो फिगर है उसको इंपैक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, आईटीसी इनएलिजिबल फॉर 16(4) और आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पीओएस प्रोविजंस।
So ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. तो 16(4) मतलब जो सप्लायर है वो फाइल कर रहे हैं आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ सितंबर रिटर्न. So say for 2021 financial year, the supplier is now uploading the invoice in the table. So in that case, what will happen? That will not be shown as 16(4) because the period for 2021 ITC availability has gone. So that's why that credit cannot be availed by me, though the supplier has shown it. Next is the POS, that is wherein the POS is shown in some other state. तो आप कहीं पे गए हैं, वहां पे आपने कुछ सर्विसेज दिया है और वहां का POS जो है उन्होंने वो POS दिया है, बट आप दूसरे किसी स्टेट में रहते हैं. So in this case also the ITC is not eligible to you. So that's why both of this ITC they have to be reflected in D2. So this is the discussion that we had done yesterday. So now today we will take the discussion forward. So कल हम लोगों ने कुछ common FAQs discuss किया था, तो आज we will discuss the other FAQs. So what are the FAQs? Credit note issued by the supplier. Okay, so one second. Credit note issued by the supplier, whether to be adjusted with eligible credit or shown under reversal. So this is very important. So क्या हो रहा है? Supplier ने credit दे दिया, credit note दिया है, तो whether we show it as all other ITCs deduct करके or we show it in 4B2, other reversals, where it is being shown in 2B. Please remember, from August 3B, जो भी credit note आपका supplier issue कर रहा है, वो अगर आपके 2B में आ रहा है 4B2 column में, तो उसको आप अभी 4B2 में ले लीजिए. ठीक है? Actually, it should go to 4B1 क्योंकि permanent reversal है. ये जो reversal है, इसका आप कभी भी reclaim नहीं कर सकते हो. क्योंकि 4B2 में वही आइटम जाना चाहिए जिसको आप बाद में जाके रिक्लेम कर सकते हैं. बट अब के लिए जो भी हो रहा है 2B में वो 4B2 कॉलम में दिखा रहे हैं. इन केस ऑफ टेम्परेरी रिवर्सल्स अदर्स में दिखा रहे हैं. तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, अदर्स में वो क्रेडिट नोट जो भी सप्लायर ने इशू किया उसको दिखा सकते हैं. नेक्स्ट इज क्रेडिट नोट बाय शोन बाय सप्लायर इन 2B बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक. सो दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो व्हाट हैज हैपेंड हियर? The credit note has been issued by the supplier to you, but you are not aware about it. So that's why you have not booked it in your books of accounts. So in this case, what will you do? Okay, in this case, if you don't show it in 4B2, then there will be a mismatch between your 4B2 and the 2B 4B2. So there will be a mismatch. So what should you ideally do in this particular situation? So in this particular situation, what we can do is that we can actually wait, for the credit note to come to our end and then reverse it. But if we do that, tomorrow we may have to pay interest. Why? Because the supplier, when he's issuing the credit note, he has reversed his output tax. So if he has reversed his output tax and I'm not reversing my input tax, then tomorrow department may say that why have you not deducted it from your input tax or reversed your input tax? Okay, so credit note which is shown by the supplier in 2B but is not recorded in books, we will show it in 4B2 column and try to reconcile it in our books as to why it has not come. Even if it is not coming in that particular month, maybe in the next month we'll take it in the books. But as per my view, the credit note should be shown in the 3B and the ITC should be reversed. Okay, and if it is a situation that it is a credit note which is wrongly given, then since you are showing it in 4B2 in the temporary reversal column, you can always reclaim this credit later on. Okay, another FAQ regarding credit note is the supplier has actually issued an invoice and that invoice I had not taken the credit. So just taking an example, say for the month of April, the supplier had issued an invoice for advertising services. And whatever was the interpretation issue, you thought that this advertising services, I'm not supposed to get it because it's a business promotion expense and I'm giving it free to the distributors and things like that. It's a gift kind of a thing. So I will not avail the credit. So आपने credit नहीं लिया है.
तो अब जाके, अब अगस्त में जाके क्या होता है, आपके टू बी में वो क्रेडिट नोट अलाइन करता है। इनवॉइस आपने नहीं लिया है, बट द क्रेडिट नोट रिलेटिंग टू दैट इनवॉइस हैज कम टू योर टू बी नाउ। सो व्हाट डू यू डू इन दिस सिचुएशन? I would, the view that I have taken is that since I have not availed the credit, I will not reverse the ITC. That is the best option that I can do. Since I have not availed the ITC, I will not reverse the credit note because I have not taken availed the ITC. The other view, which is a more conservative view, is that since this particular invoice was received and was reflected in my 2B of earlier period, say April, I will avail the credit now and then show the reversal. So net, nothing is flowing to my electronic credit ledger, but my 2A, my 2B for that particular year is going to get matched. Okay. So what is the problem? The problem is it's an invoice of an earlier period for which you can still take credit, and you have not availed the credit, but you have suddenly got a credit note during the from period after August. So what do? You avail the credit in all other ITC and show it in reversals. So net nothing flows to your 3. Next, reversal under 37. When payment is not made, how the same needs to be reversed? So the simple thing is that it has to be shown under 4B2 others column, because it is a temporary reversal. And what is the temporary reversal? It is like a temporary thing. What is temporary? Something which is not lasting forever. So whenever I am showing it as a temporary reversal, I am just showing it in 4B2. And then the next question is, the above invoice is paid to the supplier, can the ITC be reclaimed? Yes. When the amount is paid to the supplier, the ITC can be reclaimed, and we will reclaim it in all other ITC. I'll just take you to the form. We'll reclaim it in the ITC and also show it in D1. Friends, please remember, I'm fighting some of the show cause notices wherein large amounts of ineligible ITC was not disclosed by the taxpayers. So now there is a controversy, there is an allegation कि आपने ये क्रेडिट ले लिया है, ठीक है ना, आपने क्रेडिट ले लिया, आपने दूसरा क्रेडिट नहीं लिया है, आपने क्योंकि आप डिस्क्लोज नहीं किए हैं, आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया है कि 17.5, क्योंकि जो लास्ट फॉर्म we could give disclosure here as per section 17.5 of CGST, what is the ineligible ITC. Since you have not disclosed it, that means you have availed the ITC. That is the allegation. Now you have to fight the allegation. So since we have seen all these challenges, going forward, this disclosure tables, let us take it very seriously. अगर मेरा कोई भी आइटम है जो कि मैंने रिक्लेम किया है, जो मैंने पहले रिवर्स किया था, उसे मुझे नेक्स्ट महीने में दिखाना है, और अगर ऐसा कोई आईटीसी है जो कि 16.4 के लिए मेरा बार्ड है या पीओएस प्रोविजन के लिए मेरा इलिजिबल है, तो उससे भी मुझे दिखाना है. Now going back to the FAQ. So what is the permanent reversal and temporary reversal? We have already discussed. Accounting and effect of temporary reversal, I have discussed this yesterday, but I will again take it. So what is happening? We are told that for ineligible credit, okay, for ineligible credit, for reversals under 42 and 43 and 38, you have to show it as 17.5, right? So whenever you are showing it in 17, the permanent reversals, for rule 42, rule 43 calculations, it is very clear that they have been reversed, and we reverse them in the books also. But for ineligible credit under 17.5, normally what is the accounting entry that we pass? We pass expense account debit to cash, bank or supplier. As on date, that is the entry we pass. But going forward, what we need to do is food expense को debit करना पड़ेगा, ineligible ITC को debit करना पड़ेगा, cash, bank और supplier को credit करना पड़ेगा. And whenever you are reversing this particular credit, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? We will reverse, we will debit food expense again by 5 rupees, and we will credit the ineligible ITC by 5 rupees. So please remember, even in case of say goods in transit, okay, in goods in transit, whenever till now
आपने कभी भी बुक नहीं किया है, तो फ्यूचर में जाकर आप कैसे बुक करोगे? गुड्स इन ट्रांजिट को आप डेबिट कर दो, जीएसटी ऑन गुड्स इन ट्रांजिट टेम्पररी आईटीसी बोल के अकाउंट खोल लीजिए, उसमें डाल दीजिए गुड्स इन ट्रांजिट ट्रांजिट पे कितना आईटीसी है, एंड देन कैश बैलेंस सप्लाई। तो whenever you are taking this, you will have a clear idea कि कितने का आईटीसी आपने गुड्स इन ट्रांजिट में लिया है और कितने का आपने उस महीने में रिवर्स किया है और कितना आपने बाद में रिक्लेम किया है। बिकॉज अगर ये रिकॉन्सिलेशन आपके पास आज नहीं रहेगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो कल जाके आपको जब रिकंसाइल करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। नाउ गोइंग टू the other. So other thing is reversal of common ITC under rule 42 and 43. Whether excess ITC reverse can be claimed. So इसमें क्या हुआ है? मेरा एग्जाम सप्लाई भी है और मेरा टैक्सेबल सप्लाई भी है। मैं हर मंथ रूल 42 रूल 43 का क्रेडिट रिवर्स कर रहा हूं। मंथ ईयर के एंड में जब अप्रैल 21 टू मार्च 22 का रिवर्सल्स मैं चेक कर रहा हूं विद द कंप्लीट ईयरली फॉर्मूला, मैं देख रहा हूं कि मेरा आईटीसी जो है वो थोड़ा एक्सेस रिवर्स हो गया है। तो मैं क्या करूं? क्योंकि आप तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि 4P1 जो है वो परमानेंट रिवर्सल है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? एज पर रूल 38, 42, 43 सीजीएसटी रूल्स, ये बोल रहे हैं कि ये परमानेंट रिवर्सल है। क्यों हम लोग बोल रहे हैं ये परमानेंट रिवर्सल है? इफ यू गो टू डिस्क्लोजर टेबल, वो क्या बोलता है? ITC reclaim which was reversed under table 4B2 in earlier tax period. So 4B2 में जो दिखा रहे हैं सिर्फ उसको ही रिक्लेम कर सकते हैं, 4B1 में जो है रिक्लेम नहीं कर सकते हैं। But please remember, for excess ITC reversed for rule 42 or 43, you can always claim this ITC in all other ITC because that is allowed by the rules. तो अगर आपने गलती से रूल 42 या 43 का रिवर्सल ज्यादा कर दिया है, so please take that ITC in all other ITC and show it in D1 बाद में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि रूल्स अलाउ मी टू डू सो, तो इसलिए मैंने इसको किया है। और आईटीसी हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी। अच्छा, और एक चीज है करेक्शन ऑफ अर्लियर एक्सेस अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। तो इसमें क्या हुआ है? फरवरी में मैंने आईटीसी ज्यादा ले लिया, फरवरी 22 मैंने आईटीसी ज्यादा ले लिया है। अब सितंबर में जाके जब मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मुझे पता चला कि मैंने आईटीसी ज्यादा ले लिया। तो मुझे व्हाट शुड आई डू इफ आई ऑलरेडी अवेल एक्सेस आईटीसी इन फरवरी 2022? प्लीज, इफ इट इज कम दैट द आईटीसी that is there in the 2B and you have taken more than that, then that ITC you need to show as reversal under 4B1. उसको आप परमानेंट रिवर्सल में डाल दीजिए और उसमें दिखा दीजिए, ठीक है ना? उसको अदर रिवर्सल्स में मत डालिए। इसलिए हम लोग अदर रिवर्सल्स में डालने के लिए मना कर रहे हैं कि अदर रिवर्सल्स जो भी है वो उसमें से हम लोग रिक्लेम कर सकते हैं। बट अब तक जब तक ये क्लैरिटी नहीं आता है तो उसमें से काफी लोग अदर रिवर्सल्स में भी इसको रिवर्स कर रहे हैं। बट एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, एंड ऑफ द ईयर मतलब सितंबर 2023 जब आएगा तो आपको 22-23 का जितना भी आपका टेम्पररी रिवर्सल में आपने दिखाया है उसका पूरा रिको करना पड़ेगा कि उसमें से कितना है जो आप रिक्लेम करना आपका था और आपने कितना किया और कितना नहीं किया। तो अगर आपने रिक्लेम नहीं किया उसको फिर आपको परमानेंट रिवर्सल में ट्रांसफर करना पड़ेगा at September 23. Next is car purchase in the month of August 22, ITC reflected in 2B of August 20. तो इसमें क्या है? Ineligible ITC है, 17.5 का ब्लॉक क्रेडिट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? हम लोग इसको क्लेम करेंगे अंडर ऑल अदर ITC, हम लोग इसको क्लेम करेंगे एंड इसको हम लोग रिवर्सल्स 4B1 में रिवर्सल्स में दिखाएंगे। नेक्स्ट, ITC फॉर गुड्स सर्विसेज रिसीव्ड टुवर्ड्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वर्क्स फॉर अदर्स। तो आपका एक फैक्ट्री का काम चल रहा है, उसमें आपको आईटीसी मिला है और आईटीसी का जो भी 2B में अभी क्रेडिट आपको दिख रहा है, ठीक है ना? आईटीसी का क्रेडिट आपको दिख रहा है, बट उसमें से कितना आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलोकेट करोगे, कितना प्लांट एंड मशीनरी के लिए एलोकेट करोगे, यू आर नॉट श्योर। ओके, फॉर एग्जांपल
There is a labor charges bill, and sorry, there is a bill for some, some fabrication bill for some particular work done for some, foundation. So till now, you are not sure whether that will be a foundation for a plant and machinery or that will be a works contract. So in this situation, where you are not sure whether the ITC will be eligible or not eligible, what we are suggesting is, of course, you have to avail it in all other ITC, और इसको आप temporary reversals में दिखा दो, इसको आप temporary reversals में दिखा दो at the time when you capitalize the entire thing in plant and machinery or building or whatever head you are booking, at that point of time आप इसको जितना भी आपने रिवर्स किया था टेम्पररी में, उसको आप ऑल अदर आईटीसी में ऐड करो, ऑल अदर आईटीसी में ऐड करके उसमें से जितना पोर्शन आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए है 17.5 का है, उसको आप 4B1 में दिखा दो, उसको आप 4B1 में उस महीने में जहां पे आप जाके कैपिटलाइज कर रहे हो उसमें पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ ऑल अदर आईटीसी में लो, और फिर आपको जितना रिवर्स करना है बिकॉज ऑफ 75 इनएलिजिबिलिटी उसको आप 4B1 में दिखा दो. नेक्स्ट, in case of real estate or restaurant services where ITC is blocked, whether ITC has to be availed. Okay, this is again a very important question. See, हम लोग एक चीज समझना पड़ेगा, ये सारा जो इतना एक्सरसाइज है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है सोचना हम लोगों के लिए कि हम लोग इतने जो रिकंसिलिएशंस है, it is increasing, the workings are increasing. So why are we actually doing it? I will tell you why now. Why are we actually getting into the formula and doing all this? Try to understand something. You belong to, say, West Bengal. And in West Bengal, you have made some purchases, interstate purchases, for which you have paid CGST and SGST. And the purchases are linked to ineligible credit. 17.5 का है credit. ठीक है ना? और you are not sure, but you have not shown it as ineligible credit. Why? Because you thought क्या disclosure है, इसमें दिखा के क्या फायदा होगा. But now since you have to show it here in ineligible credit, what will happen? What will be the difference? Till now, the West Bengal government, they had to wait till September of the next year. So for 21-22, suppose for an ineligible credit of April 21, ineligible credit of April 21, the government would have to wait, the central government would have to wait till September 2022 returns 3B. Only then they could be sure that this ITC is not going to be claimed. And then they could do the settlement. But now, when every month we are going to show the ineligible credit, Rule 42, Rule 43, Rule 38, which is a permanent reversal, that money can be actually settled between the states. So don't think that whatever workings are happening, these are just happening just like that. There is a rationale behind it. Whatever we have discussed yesterday here, to ensure correct accounting and accurate settlement of funds between the state and the center. This is the reason why we are showing the permanent reversals properly. Okay, this is one of the reasons. So next is in the query part. So in case of real estate and restaurant service, we need to know that whatever ITC is available. So आपका real estate का business है, ठीक है ना? आपको credit नहीं मिलता है, तो आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, चलो मुझे टेबल 4 में कुछ नहीं करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. अगर आप real estate का काम करते हो और आपको ITC कुछ नहीं मिलेगा, then you have to avail the all other ITC. You have to avail it in all other ITC and show it in 4B1 as permanent reversal. As permanent reversal. आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 0 जाएगा, बट गवर्नमेंट का जो सेटलमेंट है वो हो जाएगा. सेटलमेंट बिटवीन द डिफरेंट गवर्नमेंट्स वो कंप्लीट हो जाएगा. तो इसलिए आपको, अगर आप रियल एस्टेट से हो, रेस्टोरेंट सर्विसेज हो, जहां पे आईटीसी अवेलेबल है, आईटीसी अवेलेबल नहीं है, ब्लॉक्ड है, तो उसमें भी आप ऑल अदर आईटीसी में दिखाइए और परमानेंट रिवर्सल में दिखाइए. तो आप बोल सकते हो कि सर मैं तो ऑल अदर आईटीसी में नहीं दिखा रहा हूं, परमानेंट रिवर्सल में नहीं दिखा रहा हूं. ठीक है ना? प्रॉब्लम क्या है? मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ नहीं जा रहा, मैं तो क्रेडिट नहीं ले रहा हूं. Sirs and madams, try to understand.
if you are not disclosing something which is required to be disclosed as per the law, if you are not reversing the ITC that has to be reversed as per the law, then that is contravention of the provisions of the law. And so applicable penalties can be imposed on the taxpayer. So that's why ये बहुत सरल सा काम है, easy काम है. आप all other ITC में दिखाइए और उसको permanent reversal में दिखाइए. Next is the table 4D mandatory and will it impact calculations? तो ये भी पूछा जा रहा है काफी सेमिनार्स में कि ये जो टेबल 4D आप देख रहे हो नीचे आईटीसी रिक्लेम which is reversed on the table 4B2, is it actually important? अगर नहीं दिखाएंगे तो क्या है? ये मैंडेटरी है. क्यों? It is notified through, you know, it is put in the form through proper notification. तो अगर आप इसको नहीं दिखाते हो, then there will be many assumptions and presumptions that can be done by the revenue authorities. तो इसलिए in my view these are mandatory. इसलिए tell your clients अगर इस महीने में नहीं हो रहा है, at least from the next month we should start showing all these disclosures properly. अगर हम लोग इसमें disclosure properly नहीं डालेंगे तो बाद में जाके जब आपका ऑडिट होगा, स्क्रूटनी होगा या इन्वेस्टिगेशन होगा, कुछ भी होगा, या तो फिर उसमें क्या है, आपको ये डिफिकल्टी हो जाएगा समझाने में कि आपने इसका डिस्क्लोज क्यों नहीं किया, कि आपने आईटीसी कितना रिक्लेम किया है. Because friends, you have to understand one thing. Whenever you are reclaiming any ITC which you have reversed earlier, there will be a mismatch between your 2A and your 3B. Okay, there may be a mismatch between your 2 and 3B. So if it is disclosed properly in your B1 column, then that mismatch between 2B and 3B, that is also explained. वो आपको किसी को अलग से explain नहीं करना पड़ेगा. ठीक है? So then ITC to be reversed by builders for purchase of more than 20% from unregistered taxpayers. So for builders, there is a rule as per third proviso to notification 3/2019, wherein बताया गया कि if you are a real estate project, residential real estate project कर रहे हैं, तो उसमें you have to purchase, you have to buy, or you have to take inward supplies of 80% supplies should be from registered suppliers. So suppose when you are doing the calculation, उसमें 80% का calculation नहीं हो रहा है, then what happens? So in that case, you have to reverse the credit. Normally, we do it in the month of April, but you have time till June of the next year to reverse this. So for the builder, when he has to reverse this excess credit that he has taken, he has to reverse it through DRC 03. He has to reverse it through DRC 03. He does not have to show it in the GSTR 3B. Why? Because उन्होंने ITC avail ही नहीं किया. तो अगर आप ITC avail नहीं कर रहे हो, तो आप GSTR 3B में जब दिखाओगे, तो इसमें क्या होगा? इसका आउटपुट टैक्स में ऐड हो सकता है. That can be a thing. जैसे आप कर सकते हो. But for all our clients, we are suggesting to make this payment, which is a payment for the inward supply shortage through DRC 03. Why? Because one more reason is whatever calculations you have done for this, mismatch, 20% से ज़्यादा है आपका purchase, so that also can be uploaded. Finally, ITC on invoices wrongly claimed under RCM. So अगर ITC जो है, आपका जो है ये ITC था, but आपने क्या किया? May 2022 में आपने गलती से all other ITC में नहीं लेके आपने RCM का ITC में ले लिया है. क्या हुआ है? आपका 2B में ITC आ रहा था 1 लाख रुपए का, तो आपको कहां लेना था? ऑल अदर ITC में 1 लाख रुपया लेना था. बट आपके जो अकाउंट्स के बंदे हैं वो नए हैं, वो फर्स्ट टाइम जीएसटी का रिटर्न भर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? उसको ऑल अदर इनवर्ड सप्लाईज RCM में दिखा दिया और आपका ऑल अदर ITC 0 निकल गया. तो अभी रेवेन्यू अथॉरिटीज क्या बोल रहे हैं कि सर आपने RCM का क्रेडिट लिया, अच्छा बात है, तो आप RCM का पेमेंट भी हमें दिखाओ. So why did you make the payment for RCM? Okay, so we have to understand that in this case, what we need to do is we need to avail the ITC under all other ITC. If the period is still available for availing the ITC, please avail the credit under all other ITC, and whatever RCM credit you have shown wrongly, reverse that in permanent reversal. Okay, reverse that in permanent reversal and show whatever right ITC you have to take in, RCM in the all other ITC. So
this much from my side. I would like to thank my friends Venu, then Unniji and Arpitji, and also my team members Anindita and Arijit, who have actually helped, in doing all this. So with this, I end the presentation from my side. So I've tried to cover as many FAQs as much as possible. So if there are any further, we have about 10 minutes left, 10 to 15 minutes left. So if there are any further queries, regarding this, maybe we can have the discussion on the queries. Any questions that you may be having on the 3B, that any practical problem that you may be facing or things like that. Because whatever I have tried to cover is the different seminars and webinars I've attended. All these questions were asked to me. So I've tried to put them at one place and tried to share it with all of you. But the basic purpose of this, part one and part two of the discussion that we had is that we as professionals go back to the taxpayers, okay, and the the team members, our team members, and try to actually make them aware as to what changes can be done. At the same time, this YouTube video may also help them, to get back to the thing whenever they want to, whenever they have the queries. So if there are any queries, I would love to take them. Or if there are no queries, then maybe it's already about 9:10. I think it's dinner time for many of us. So we can close the meeting also. My purpose of having it late is that yesterday many people had complained that because of the tax audits, they were busy. So to have it a bit late. So that's why I had it a bit late today from 8:30. So you have my numbers in the group. So you can always post any questions in the group. We can always get back. But only thing I request is that, see, why I have come with this presentation. I would like to take 2 minutes for the thing. I have come for this entire presentation because of one thing. I'll just show you why. Why I've come for this. Why I'm trying to take so many presentations, as many presentations as possible. Like the main reason for coming for the presentation is that the changes that are there. Yeah. So here, the circular and the notifications that are being issued, these are already issued. But in case of the taxpayers, many of them have not actually gone through them. So because of that, many people are still taking the decisions on the basis of, whatever we used to do previously. But then we are getting ASMT 10s, scrutiny notices. जहाँ पे बोल रहे हैं कि तुमने क्रेडिट नोट को एडजस्ट क्यों कर दिया, जहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने वो एक्सेस आईटीसी क्लेम क्यों नहीं किया, जहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने ठीक है चलो आपका जो है उन्होंने 16/4 के टाइम के बाद पेपर में बोल रहे हैं कि आपने खुद आप 3B के बाद मतलब 3B के डेडलाइन के बाद जैसे 2021 का रिटर्न आपने जनवरी 22 में किया है, ठीक है ना, तो इसमें आप कर रहे हो तो दैट मींस यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट. तो आपने क्यों लिया है? सो इफ वी गो बैक एंड टेल द टैक्स पेयर प्रॉपर्ली कि आप इफ गो बाय द रूल्स आपको जाना पड़ेगा, देन we will have lesser number of litigations, because all these litigations, they are very expensive because the interest is there, the penalty is there, and a lot of other, the professional fees expense. So many things are involved. And leaving all this, what I find most challenging is the time that we are spending on these litigations. So if from August 22, we can take on the challenge that, okay, the new form has come, so हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा disclose करेंगे, properly दिखाने की कोशिश करेंगे जितना possible है. So I think, and we'll also keep the reconciliation that we are doing. Then I think we'll have lesser, litigations in the days to come. So thank you very much. And I think, yeah, there are some, yeah. Yeah, I'll share the PPT in the WhatsApp group. Yeah, I'll do that. Thank you, everyone. Thank you for being a part of this, discussion. It was really lovely to have each one of you in the discussion. Thank you very much and have a wonderful evening ahead.